क्या हुआ? Hello everyone. लोग आ रहे हैं इतने. I would ask you to drop your favorite song because the assignment is related to that. ठीक है? Also let me join from my phone. एक minute. डालो यार. एक मिनट. Mockingbird ओके. नहीं करेगा यार तुमको जज. Entire P-pop culture. Disc one ओके. Believer ओके. Done. अच्छा एक ये गेस करो कि बिकॉज कल पोल्स वर इक्वल. अब तो 13-12 हो गए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं गेस. बट मैंने मतलब आई व्हेन लास्ट सॉ कि 12-12 थे. तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ द टुडेज क्लास रिलेटेड टू? एनिमेशंस एंड यूआई एक्सपेरिमेंटिव्स या फिर वेब एपीआईज एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग? बताओ, गेस करो कि व्हाट डू यू थिंक इट इज़ अकॉर्डिंग टू यूआई. ओके. API animations or related to audio and sounds. API animations. Okay. अंदाजे गरम. बताओ यार, आज लोग भी कम हैं एंड असाइनमेंट सबमिशंस भी कम होती जा रही हैं. कोई नहीं, असाइनमेंट्स अगर कोई नहीं सबमिट कर पा रहा तो इट इज़ जस्ट फॉर योर अकाउंटेबिलिटी. कभी भी कर देना. अगर आज टाइम नहीं है, कल टाइम है, तो इट्स नॉट लाइक कि यू कांट सबमिट सेकेंड असाइनमेंट ऑन थर्ड डे. वो कभी भी करते रहना. देयर आर नो इश्यूज़. बाकी
बताओ यार बाकी लोग भी। रोजेस भाई ये ओके कूल। I will wait one more minute and then we will start the class. टिकट अगर म्यूज़िक के बारे में पूछ रहे हो तो एनिमेशन रिलेटेड टू ऑडियो एंड साउंड ही होगा आज की क्लास। इंटरेस्टिंग एनालॉजी, गुड। You're right, it is related to, not related to audio, because the final assignment includes something related to audio. That's why I'm asking this, but yeah, it is related to UAE exprimitives and animations. और बताओ वैसे जनरली कुछ कैसा चल रहा है या कोई दिक्कत वगैरह? मीनवाइल okay, this is the people who submitted the assignments. Karan, Jaspal, Sudhanshu, Kamaljeet, Kavish and Sujal. All of them were very good and way better than I expected. I guess we can now start the class. It is 4:10 and yeah, so before animations and UAX primitives, we will start with the grids, making grids. It's going to be interesting थोड़ा सा. UAX primitives में थोड़ी theory आएगी. Starting and end में we will code. तो I would suggest कि open क्या कहते हैं उसे, make a new Flutter project and that's how we will start. ठीक है? So डे 4 है ना अब तो, आई गेस यस. Let it connect. बाकी while my machine is connecting, you guys also connect and create a new Flutter project for day 4. People who joined recently, we are working with animations and UX primitives. Before that, we are going to complete grids and some more widgets which might be useful, which I thought to share with you. So let's remove all of this and add a stateless widget. ओके, आई एम एज्यूमिंग सबका ऐप बिल्ड हो गया. नहीं हुआ है तो लेट इट बिल्ड, कोई दिक्कत नहीं है. एंड प्लीज़ टेल मी अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है या फिर कोई इश्यूज़ है, एंड अगर नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो लेट्स सी द स्लाइड्स. इसको मैं हटा देता हूँ इधर. वेयर इट इज़. हाँ, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ग्रिड्स. ग्रिड्स तो सभी को पता ही है कि दिस इज़ हाउ अ ग्रिड लुक्स लाइक. We are just going to make it in Flutter via a widget which is called GridView, exactly like list view. So as you can assume कि
how a grid would look like. Let's try to directly code it, ठीक है. So let's remove this. I will write GridView exactly like we did yesterday, dot builder, and now it has two parameters. We'll see दोनों, ठीक है. One is the item builder, which is exactly same as the grid view, the list view which we did last night. So let's add पहले तो कि हमें बनाना क्या है eventually, what is the eventual child which we want to create. So let's return maybe a container which has, say, a child of center item, and let's add some decoration to it, which is box decoration, border color black, colors dot amber, ठीक है. एंड वी विल ऑल्सो ऐड ग्रिड डेलीगेट ऑल्सो, ठीक है. तो आइटम बिल्डर हमने ऐड कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड ग्रिड डेलीगेट. सो व्हाट इज़ दिस? देयर इज़ दिस big widget, a big class which is a sliver grid delegate with fixed cross axis count, ठीक है. So anywhere where you will see sliver लिखा हुआ, it just means a scrollable area. It is just lower primitive layer of anything scrollable. So let's say list view were scrollable, right? So internally list view is also implemented using slivers. So how slivers is implemented, we right now don't need to understand, but slivers जब भी you will understand, listen, so you will get to know कि this is related to something scrolling, ठीक है. तो this just delegates to a function that how grid will be made, ठीक है. So sliver delegate, ठीक है. And we need to write cross axis count. So in this case, so let's see what is cross axis count. So यहाँ पे cross axis is number of columns which we are going to make. So for this case the cross axis count is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 is the cross axis count for this grid. So similarly we're making a cross axis count of 2 for our grid, ठीक है. Similarly you can also define the main axis count. तो where is the slide, ये रही. And main axis spacing also. तो what would be the spacing, we can also define that, ठीक है. बहुत सारे parameters हैं. Similarly cross axis spacing, and also there is another parameter which is child aspect ratio. So as you can determine what would be a child aspect ratio, it is basically width by height of the object which we are trying to make. So let's say you're trying to make a container, it would be width by height. So to make a tall container, the height should be more. So we will add a number, let's say less than 75, so it will make a tall container. And if you try maybe let's say 1.25 or something bigger than 1, it would be a horizontal container. So let's make it 0.75 for now, and yeah, that's it. ये construct isn't called okay. So let's remove this const and everything is okay. So यहाँ तक जो मैंने syntax बताया, is there any issue? अभी एक मिनट पहले देख ही लेते हैं. So what is the output? By the output you will understand कि what is happening, ठीक है. तो as you can see कि हमने cross axis and main axis spacing define करी थी of 10 pixels, right? Main axis spacing and cross axis spacing of 10 pixels, and cross axis count which was 2. So you can see cross axis count is 2. So let's try to make it maybe 4. As you can see now the cross axis count is 4. ऑल्सो हमने कंटेनर तो बताया ही था, उसके बॉर्डर रेडियस एंड एम्बर जो कलर था, इट इज़ बीइंग पॉपुलेटेड हेयर. बाकी जो आइटम्स, आइटम 1 2 and 3, बिकॉज इंडेक्स भी हमें मिल रहा है हर एक आइटम का, सो दैट इज़ बीइंग ऑल्सो पॉपुलेटेड हेयर, ठीक है. दिस इज़ आई गेस सिंपल इनफ, बट एज यू कैन सी कि इट इज़ इन्फिनाइटली स्क्रोलिंग, एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो लेजी. जैसे जैसे आइटम्स बन रही हैं, सो वैसे वैसे इट इज़ जनरेटिंग दैम, नॉट एलोकेटिंग ऑल ऑफ देम इकट्ठा. बट दिस इज़ इन्फिनाइट बिकॉज हमने आइटम काउंट दिया नहीं है जैसे हम लास्ट क्लास में दिया था. लेट्स गिव इट आइटम काउंट ऑफ 20, एंड नाउ यू कैन सी इट इज़ कन्फाइंड टू 20 आइटम्स. एनीवन हैज़ एनी इशूज़ रिगार्डिंग दिस ग्रिड व्यू जितना हम अभी वी हैव डिस्कस्ड? प्रियांश, कविश, करण, ओके, ठीक है. सो आई एम एज्यूमिंग कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, एंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज़ ग्रिड व्यू. एंड
now you can apparently make grids. बाकी like gridview.builder, ये हमने पढ़ ही लिया, that is nothing to look into. There is also gridview.count. So this is exactly कि हम we can also define individual elements. यहाँ तो we are generating elements automatically by writing a container and it is populating automatically the containers, multiple containers, right? So अगर you want कि full control over कि कौन सा children कैसा होगा, तो you can also do this कि instead of writing view gridview.builder, you can write gridview.count. Then you can remove all of this and just keep the properties हमने define करी थी already. And instead of item builder, you have to obviously write children. It is the exact same thing which we were doing in list views. So now you can write 4 containers. Simple container, let's say color dot red, and similarly you can add 4 more multiple containers, how much you like. ठीक है, let's make it amber, let's make it green and maybe blue. See, I guess everything is all right with grids. बस grids इतना ही था. It is as simple as that. Now we can move to stack. So stack तो everyone knows because we have discussed a lot about stack, but the context is a little different right now. The thing is same कि you can see जब you arrange something in columns, every widget politely goes below it and does not try to overlap, and same for rows. But stack, it by default overlaps, the second widget overlaps on the first widget. So अगर let's say there is मान लो मैंने पहली widget लिखी है widget 1, नीचे है widget 1, then we have widget 2, then the second widget will be automatically placed on top of the first widget. ठीक है, this is as simple as that. Let's see this in action कि let's make a simple stack. So this is a stack, then we can write its children simply, and let's try to write some containers only. ठीक है, तो container width let's say 20, then width let's say height let's say also 20. Let's make it colors dot red. ठीक है, similarly let's make another container and we will try to reduce its size just to see कि if it is even overlapping, and also change the color let's say to cyan. as इसको मैं बड़ा ही कर लेता हूँ यार थोड़ा सा, it is very small, 200 200 100 and so. So as you can see कि जो red वाला था which was the bigger one, वो हमने पहले लिखा था, and on top of that because second में बनाया गया है ये वाला जो what is this called, दूसरा container, तो it is on top of that. ठीक है, we can also define the position अब based on this positioned widget. ठीक है, and now you can define की मतलब right now it is at 0 0 because the coordinate starts from here, तो it is on 0 0. now you can define की bottom से कितना होगा या top से कितना होगा, तो let's go and define it. bottom से let's raise it 20 pixels, and from right let's also raise 20 pixels. ठीक है, and now you will see कि relative to this now it is 20 pixels from the bottom. ठीक है, anyone जिसको stack में कोई issue है? बता दो भाई, if I'm going थोड़ा fast या थोड़ा slow whatever, या फिर कोई issue है तो specific. Okay, I guess we can continue. इसके बाद to UI UX primitives. तो let's discuss a little about UI UX primitives. So अभी तक we were making not a lot of serious apps, but when we will deploy to production we need to think of थोड़ा बहुत UI about UI and UX. तो the issue is कि I just can't teach you UI UX के सोचने का तरीका. ठीक है, what you have to do for this is to look into lot of good designs
and you will eventually get a sense in your brain, subconscious mind, that how things work. So there are some good websites like Dribble for inspiration, etc. So with the triple B, so if no one knows about it, so if you can go here and जैसे this is the first screen, ठीक है, मतलब कोई random आया, so this is some web3 app or wallet. तो as you can see कि you can get the inspiration of colors and also the designs, ठीक है, थोड़ा बहुत, and you can tweak it based on that. But first time अगर someone is making, तो you can't just अपने आप से you can't make it because you don't have the hint of it, because आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी नहीं है फिलहाल, है वेबसाइट्स इन द सेंस मतलब ऐप्स देखी नहीं है. तो फॉर लेट्स से आई वांट टू मेक अ जिम ऐप. So see, this is a very good looking gym app, so you can get inspiration from this or this, etc. And merge थोड़ा बहुत आगे पीछे करके. And but one thing you need to define always, you should have a consistent color scheme across your application. So as you can see कि यहाँ पे one is this neon color, उसके बाद the background is black. We will discuss about this कि colors के बारे में भी, and we will पहले हम जो हमने slides पे अभी देखते हैं. So these are very good looking applications. One of them I have applied is Uber. So then is Spotify. Spotify is one of the best design languages to exist. And then is this random app from a random company, but you can look into it कि जे को look है. You can look and see the inspirations from different apps. बाकी we will talk about some primitives which you need to consider while making some applications or while looking to different designs जो यहाँ पे हैं, ठीक है. तो so the holy integer. So the holy integer for UI UX is 8, right? So whenever you try to add some padding or you're trying to add maybe some space between two widgets or screens, so जैसे कि let's say the padding around this widget, this is a widget, padding around this is, let's say I'm assuming it is 16 or 8 pixel, but the point is कि जैसे इसके ऊपर भी this is 16, ऊपर 16 pixels. If you are I'm not able to, my mouse is not वो, तो this is 16 pixels and this is नीचे 8 pixels, जो इस वाले ये 38.4 मिलियन के नीचे है, जो this is 8 pixels and this is 16 pixels की padding. Similarly यहाँ पे नीचे it would be, इसके नीचे J-call के नीचे this would be 16 pixels की padding, ठीक है. Similarly यहाँ पे this would be 16 pixels की padding. So you can design based on 8 का मल्टीपल. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब अगर पूरी स्क्रीन पे 16 पिक्सल हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. तो जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज़ 24 पिक्सल्स. आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं पता. आई कैन टेल अबाउट दिस एप्लीकेशन बिकॉज ये मैंने बनाई है. तो यहाँ पे देयर इज़ 20, दिस ऑल्सो फॉलोज 8 पिक्सल रूल, ठीक है. बाकी जनरली व्हेन यू गो टू कंपनीज, आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की कि टू अंडरस्टैंड कि 8 पिक्सल डालनी है, 12 पिक्सल डालनी है. जनरली ऑब्वियसली देयर आर UI UX डिज़ाइनर्स, यू विल गेट एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ एवरीथिंग what you have to build. तो but because you are right now not in a company, you have to do it yourself. So this is 8 pixel rule. Everything you can do it in 8 pixels. One thing is कि this helps with in the sense कि अब मुझे अगर इसके ऊपर पैडिंग डालनी है, तो मैं सोचता रहूँ बैठ के कि 10 डालूँ या 11 सही रहेगी या 9 डालूँ. तो इंस्टेड वी डिफ़ॉल्ट टू 8 के मल्टीपल्स. वन इज़ दिस कि दिमाग डिक्लटर हो जाता है. दूसरी बात कि अगर यू आर लेट्स से मेकिंग 100 स्क्रीन्स इन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सम इन द स्क्रीन आपके दिमाग में एक दिन था कि ओके 10 पिक्सल की डाल देते हैं, या 5 दिन बाद जो आप नेक्स्ट स्क्रीन बना रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा है कि ओके आई गेस 15 पिक्सल्स इज़ गुड इनफ. तो जो विजुअल हायरार्की है ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स, इट गेट्स डिस्टॉर्टेड वाइल डेवलपिंग विद अ लॉट ऑफ टीम्स और व्हेन यू आर मेकिंग लॉट ऑफ पेजेस, राइट. सो एक तो विजुअल क्लैरिटी तो मिलती ही है. दूसरी बात, दिमाग में एज अ डेवलपर यू हैव ऑल्सो द क्लैरिटी कि या तो मैंने 8 डालनी होगी या 16 डालनी होगी इन सर्टेन मल्टीपल्स. बाकी सेकेंड थिंग इज़ इट इज़ वेरी गुड फॉर द एंटी-एलियासिंग. तो एनी वन नोज अबाउट दिस? कोई गेम्स वगैरह खेलता हो तो एनी वन नोज अबाउट दिस? कमलजीत, ओके. एनी वन एल्स? Priyansh, can anyone tell me by turning on the mic
if you are comfortable कि what is anti-aliasing. Okay, cool, you are right. तो let's discuss what is anti-aliasing. तो as you can see, okay यार उसका मैं नाम भूल गया, ब्रेन, 1 second, let's search smoothen edges, ये रहा. So Bressenham. So anyone knows what is Bressenham algorithm? किसी ने पढ़ा हो? No. Okay, ठीक है. तो if you are in ITCS electronics वगैरह tech branches, you will study it in I guess 4th year वगैरह to draw these pixels on screens etc. But the point is कि at least you guys know इतना, I'm pretty sure कि this equation, अरे यार sorry, yeah, so this equation x square plus y square equal to r square. Anyone knows this? Obviously everyone knows this, right? Yeah, so you guys know कि circle कैसे बनता है. To draw a circle, wait a second, I will try to figure it out थोड़ा सा कि if I have a good illustration to show you. यहाँ पे yeah, so here it is. So as you can see ये circle दिख रहा है सबको. This is just a representation of this equation by doing some calculations. तो obviously यहाँ पे I plug in this equation x square plus y square equal to r square. I मतलब x minus a का whole square plus जो भी होता है, मतलब जो normal equation होती है. I plugged in the coordinates of the center and the radius which I want to make. तो I will get the boundary obviously of the circle, and based on that I will fill certain color के pixels onto the screen. ठीक है. But as you can see कि pixels के बीच में there is this jaggedness, it is not smoothened. So there is this technique called anti-aliasing by which we try to paint the nearby pixels to make it look like smooth with certain opacity. ठीक है. कैसे? जैसे कि this was a line made from that Bressenham जो भी algorithm का नाम था. Similarly यहाँ पे भी there would be a lot of lines made from the similar algorithm. Wait a second, क्या हो गया इसे? अरे यार. Okay, cool. तो यहाँ पे if I am able to find some line, let's assume this is a line, yeah, this is a jagged line. ठीक है. This is made using the same algorithm जो which we talked about. We don't have to discuss it कि कैसे it works. But the point is कि when you draw this line and calculate the pixels, or for similarly for the triangle, you can see कि यहाँ पे certain pixels हैं जो this makes them jagged, but जो ये certain pixels है जो side में है nearby pixels हैं, we paint them in certain opacity that it kind of looks like a smooth line. ठीक है. Similarly for this triangle, so this is jagged and we try to paint nearby pixels with certain opacity, so this looks like a normal triangle when you zoom it out, or it is way better than जो हमने अभी देखा, जो circle देखा था. So what happens is that 8 pixel वाला जो ये count है, it is way better for anti-aliasing, and that's how when you scale to multiple screens from tablet or mobile or a big desktop, it is easier for Flutter to do it, and the anti-aliasing वाला part, and it is better scaling, and the anti-aliasing का जो effect है it is better. So it is generally considered कि 8 pixels is a good choice. So this is the holy integer which we discussed. Next is the fat thumb rule. Okay, so it talks about fat thumbs of humans. The point is that because mobiles are small screens, so for that to work you can't design small buttons. Small buttons are designed for desktops. ठीक है. So let's open some random website. So okay, let's go to dashboard.
for a second. So as you can see, all the buttons are very small because मेरे पास full control है about using my trackpad to click anywhere, ठीक है. But when you try to go into mobile, you have very certain space and you can't ऐसे उंगली you obviously because if thumbs are fat, you can't just point it out to a very small location. So there are certain rules to consider while making a button so that it is easily reachable and clickable, right? So iOS standard suggests that you need 44 into 44 pixels minimum button. This is the minimum size I'm telling. इससे ऊपर you can obviously make, and for Android it is 848 into 48 DP. DP की full form I guess dimensional pixels, non-dimensional pixels. DP full form pixels. Density independent pixels. So it just basically means कि because there are some old screens and new screens, and as you can understand कि हर एक screen का pixel per inch होता है, तो हर एक इंच पे कितने pixels can be installed. तो old screens are less sharper, that's why वहाँ पे pixels per inches कम होते हैं, and new screens are way sharper, so वहाँ पे ज़्यादा होते हैं. So to maintain consistency there is a standard unit which is independent from the pixel density, which is called DP. हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फ्लटर ऑटोमेटिकली हैंडल्स दिस DP वाला इशू. तो वी जस्ट नीड टू राइट, जैसे हम लिखते आ रहे हैं कि अगर स्टाइल फॉन्ट साइज इफ वी डू 20, तो वी जस्ट हैव टू डू 20, नो इशूज़, एंड इट विल ऑटोमेटिकली वर्क. एक मिनट, देयर इज सम कॉल. या so Flutter automatically handles that for us. This is for Android 48 into 48 and iOS के लिए 44 into 44. As we know, Apple is a huge company, so उनका मतलब काम ही रिसर्च करना है, and that's the thing why they are so good. But the point is कि there is this guide which they keep updating and research publish करते रहते हैं. So this is the design languages for iOS and macOS. बहुत इंटेंसिव ऑब्वियसली ये गाइड्स वगैरह रहती हैं, तो यू कैन गो एंड रीड दैम टू अंडरस्टैंड हाउ iOS थिंक्स ऑफ डिज़ाइन. सिमिलरली देयर इज़ अ मटीरियल गाइड फॉर एंड्रॉयड, material design for Android. So you can also look at how they think of their designs. They call it their designs, they call it material, and they also released Material 3 Expressive from what I remember, recently. So this is a big refresh to their design language. You can also look at these if you want to go deep into UX, but abhi hame, I guess for this bootcamp it is enough to understand कि कुछ certain rules which we need to consider. ठीक है, let's show this. So this is a simple standard button which we made of 48 and 48, and as you can see कि मैंने DP वगैरह कुछ लिखा नहीं है, it automatically considers and does it based on its internal engine. ठीक है. Next is safe area. So as you can see कि as we are upgrading from phones from 4-5 generations, the phones are not rectangular now, so they are weird notches and weird everything on the phone. But before this you can see कि the phones were pretty much rectangular. तो as they are evolving we have to consider it कि जैसे these areas जो ऊपर हैं यहाँ पे, या फिर these areas जो ये वाले हैं, बिकॉज ये कर्व्ड है ना सारा एरिया, तो जो ये नीचे वाले एरियाज़ हैं वी डोंट एक्सीडेंटली पुट सम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और एनीथिंग इनटू दिस एंड दिस एरिया और दिस एरिया, बिकॉज शायद इफ़ यू लुक इनटू इट कि जो हमने अभी भी ऐप बनाया है, देखो ये ऑटोमेटिकली इट गोज़ अबव द सेफ एरिया विच वी डोंट रिक्वायर, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इसमें मर्ज हो जाए एक्सेट्रा, वी डोंट वांट द बैड यूज़र एक्सपीरियंस, सो यू नीड टू प्लेस इट इनसाइड द सेफ एरिया. So how you will do it? It is very easy in Flutter again. You just have to wrap your okay, let's close this. You just have to wrap your scaffold into a widget, non-interestingly called safe area, and if you I will reload this, you will see it automatically placed it below the safe area now. ठीक है.
So it is as easy to do it, to place it inside the safe area. Yeah, scaffold, safe area, column, that's it. Next, we have typography scale. Two things which I discussed. Button should be big, but from what you are thinking, button बनाने के time, generally according to good principles, it would be bigger. जैसे अगर let's say I make a random button out of my thinking on my phone, it should be a little bigger than it. मतलब just my observation which I am telling you, and any text you place it should be generally smaller than what you think. ठीक है, because we discussed कि screen का size is कम, इसलिए you can't tap on it, so you have to make it bigger, the button. But because you have to show a lot of information, the titles and headings and the metadata or any other text, it is generally थोड़ा smaller. ठीक है. So if you let's go to some good app, let's say Zomato. Zomato app. So let's look into this. So as you can see ki, yeah, this is very information dense, and even when you will make an application, it has to be kind थोड़ा बहुत information dense, not इतना कि वो user का understand क्या हो रहा है. But the point is कि I want everything mostly सारा ऊपर ऊपर से to see it on my screen. तो सी द लोकेशन भी आ गई मुझे, मेरे पास सेल्फ पिकअप डिलीवरी भी है, फिर सर्च भी है, ऑफर्स भी हैं. तो जितना यू कैन हुक यूज़र इनटू द स्क्रीन, उतना यू हैव टू बाय पुटिंग इनफ कंटेंट कि वो बहुत ज़्यादा भी ना लगे एंड बहुत कम भी ना, मतलब ऐसा भी ना हो कि यूज़र हैव टू नेविगेट इनटू डिफरेंट पेजेस एंड इट गेट्स द यूज़र गेट फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है. तो एज यू कैन सी कि द फॉन्ट साइजेस, बेसिकली वी विल यूज़ दिस कि टाइपोग्राफी गाइड है थोड़ी सी ये कि टाइटल एंड स्क्रीन हेडिंग्स वुड बी जनरली फ्रॉम 20 to 24 SP. SP is pixels which exist in my Flutter application into user text scale preference. So let's assume कि this is the multiplication factor right now is 1. So let's assume 20 to 24 pixels for now. ठीक है. Body text is 14 to 16 pixels, secondary metadata is 12 to 13 pixels, and buttons are 14 to 16. Button text is 14 to 16 SP. ठीक है. SP is user text scale preference. तो accessibility वगैरह के लिए या फिर in settings you can in most applications go and increase the size of the text. So it is just a factor which you need to account. Instead of कि asking the user की font size कितना रखना है, you ask a scaling factor based on your application. So let's assume this is 1 or 2 or 3. So whatever the user prefers, you just multiply this number with that. So generally by default it is obviously 1. So I'm just telling you a normal number ki 20, 24 and 14, 16, 12 to 13 and 14 to 16. So जैसे there is no titles here, but this is the heading, this is the metadata, and this is secondary data. So you can examine थोड़ा थोड़ा तो कि how it is working. बाकी this is the general guide. It is not necessary to use this obviously. When you will go to multiple applications and see what is happening, what you have to do, you have to tweak everything according to that. Next is 60-30-10 color rule. So colors are very important, and there should be not a lot of colors in your application. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हर एक विजेट डिफरेंटली स्टाइल हो जा रही है या डिफरेंट ही कलर आ जा रहा है. सो इफ़ यू गो टू एनी वेबसाइट ऑल्सो दिस अप्लाइज, इन एनी एप्लीकेशन दिस ऑल्सो अप्लाइज कि देयर वुड बी 60% न्यूट्रल बैकग्राउंड. सो न्यूट्रल कलर्स, what are some neutral colors according to you? Give me in chat. What are some neutral colors? White is neutral color. White. Black, right? Gray, right? Light blue, right? Okay, kind of. So you get the point ki what are neutral colors. Yeah, right. Light green, white, pale, teal, white, black, teal, purple. Okay, beige, right? So these are neutral colors. Then we have secondary colors and accent colors. Let's so you can see percentage kitni hai, 60, 30 and 10. Accent color is for CTAs. CTAs in the sense कि a button you might want to click
let's say order now, so that's a CTA button. That should be a kind of a different color, because you want to grab users attention to the order now button or purchase now button, right? Surfaces, normal surfaces जो भी एग्जिस्ट करती हैं स्क्रीन पे, या कार्ड्स वगैरह एक्सेट्रा, वी विल ट्राई टू लुक एट सम एग्जांपल्स एंड सी कि हाउ इट इज़ वर्किंग. Let's look at this Zomato का ऐप ही है. I'm not sure who made this illustration, but it is obviously not right, I guess. But the point is कि as you can see कि एक इनका primary color है which is red, which they are using. Neutral color as we discussed पीछे, ठीक है. And the red is here the accent color. So as you can see 50% off is a CTA, 20% off is a CTA. So this is red. Then neutral colors and the surfaces का color यहाँ पे they choose slightly whatever this is, gray, right? You will observe this in any website or any application. So let's go to maybe Spotify. Yeah, so similarly they have the accent color which is this iconic green सा जो भी इनका है in their design language. The neutral color is slightly dark gray and the surface का color is this one, the lighter gray, ठीक है. So you will observe this in almost all the applications. So let's see another example, last example. Tell me a good app to look into it. कोई भी random app बता दो, we will see. Viewstats.com. Obviously you can similarly see कि यहाँ पे they have the neutral color ये वाला, then the accent color for sign up because this is a CTA, this is red, and the surfaces it is this white color or off white color. तो you will see this across. यहाँ देख लो, मेरी वेबसाइट पे देख लो, तो you will see the similar design language. So the accent color for the CTA is this one, or this cyan सा color, then the neutral color is this, and for surfaces this color. So you will see this design language everywhere. And yeah, that's it, I guess. Examples भी हैं, wow. तो look at another example यहाँ पे भी. So 60% is this neutral color, then the surfaces one, and then the CTA. Other examples भी हैं for Domino's, McDonald's and Walmart's caps. Yeah. Any issues, anyone? थोड़ी थ्री हो गई है, but you have to थोड़ा listen कि about the CTs वगैरह, मतलब sorry the design language etc. But अगर if anyone has any doubt, yeah, cool. I guess we can continue. So white spaces, negative spaces. White space is an active design element. If two things are related, keep them close. Yeah, basically let's go to again some examples only, because that's the best way to understand. Let's only open Zomato. Where was the last example we saw? That was a good one. No man, let's see this one. So as you can see, this is the whole app is filled with white spaces like नीचे, या padding is also considered a white space या extra space. जैसे इसकी padding is let's see, जैसे इसकी padding let's assume this is 8 pixels यहाँ पे, ठीक है. तो around across this is 8 pixel, 8 pixel, 8 pixel, 8 pixel, but there is also this empty space which is created aside from this 8 pixels, ठीक है. तो you will see also this in every app कि there is separation of concerns to maintain a visual hierarchy. So these are grouped together obviously. So these are separated by adding some extra white space. Similarly, यार एक तो मैं zoom नहीं कर पाता, हाँ. Similarly these are grouped together, जो these tabs are grouped together and these are grouped together, and there are white spaces to basically separate them from each other. As यहाँ पे भी देख लो, जैसे this is a different element and these should be grouped together because इसके बाद अगर let's say 10 searches होते, they would be in a certain group and यहाँ पे white space है. Similarly this is a second trending near you, तो यहाँ पे भी there is certain white space to maintain. Yeah, that's it I guess. बाकी अगर एक example और देखनी है तो we can see maybe what let's say Domino's, वो तो मतलब काफ़ी
लेट्स सी, इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है वैसे, बट खैर कोई नहीं. सो यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे भी वाइट स्पेसेस तो हैं ही ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट अ वेरी इंटुएटिव और गुड ऐप, बहुत पुराना है ये, दैट्स वाई. तो लेट्स सी कोई और एग्जांपल. स्पॉटिफाई देख लें क्या. सो यहाँ पे भी एज यू कैन सी कि there is certain padding of, let's assume 8 pixels. यहाँ पे भी 8 pixels, but there is also extra white space to make it different from this part and this part. So these are grouped together and these are grouped together. ठीक है. Similarly यहाँ पे भी there is extra space. 8 pixels तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हैं, because this the 8 pixels are throughout, but उसके बाद there are 5 or 6 more pixels. Someone said to look into YouTube Studio. Okay. Yeah, ये भी सेम थिंग इट फॉलोज. यू कैन सी ऑल द ट्रेंड्स जो हमने डिस्कस करें हैं कि देर इज़ सम CTA का एक्शन कलर, देन देर इज़ द सरफेस का कलर, ये वाला मतलब, एंड देर इज़ दिस न्यूट्रल बैकग्राउंड कलर. उसके बाद ऑब्वियसली दे आर सर्टेन वाइट स्पेसेस विच आर बीइंग मेंटेन टू सेपरेट दिस फ्रॉम अदर एलिमेंट्स. कूल. I guess we understood ki what are white spaces. Yeah, so it also, there's a small test to squint your eyes at the screen of your application, and you will automatically see कि कुछ parts separate हो रहे हैं from one another if there is good enough white spacing. Yeah, that's one thing to look into it. Okay, यार मैंने examples डाली हैं. Why we are looking. Okay, never mind. I can't zoom into this, but okay, now I can. तो similarly इसमें भी you can see कि these are grouped together, but that's why there is some certain white space. And similarly for this is not a very good example though, but yeah, let's continue. So that were UI UX primitives. That is something जो मैं थोड़ा बहुत बता सकता था, but to get the hint in your mind कि how to design a good UI, you need to go and look around into different applications and see them. One more good tool, if I am able to open it right now, adobe.com. Yeah, this works abhi bhi. Cool. So this is a good tool, color.adobe.com, and you can create your color themes directly यहाँ पे. तो ये तो 5-6 का कलर थीम बता रहा है. I guess you can just spin the wheel. Yeah, let's explore this. Explore. There's also explore tab, and there are some good color themes which are already made by people. You just have to look into the colors and decide ki which one will go according to you. These are made using color theory etc. मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम कलर्स उठा के डाल दिए हैं. I'm pretty sure, but you can look into these. This can be one of the color theme for your applications. And also you need to decide before building an application ki, let's say Zomato is an application, so you might have heard ki red invokes hunger etc. So this is color psychology वगैरह, but right now we don't have to go into color psychology because थोड़ा सा पढ़ना is not doesn't make any sense. पूरा अगर किसी को पढ़ना हो तो eventually बाद में कोविड के बाद you can learn, but this is a good tool to explore if you don't want to go deep and create your own color palettes. color.adobe.com. ठीक है. External dependencies. Yeah, so let's now code a little and but understanding thoda sa. So can anyone think of what do you mean by external dependencies in your application? बताओ. इंग्लिश के शब्द हैं just external और dependencies. What do you think by them कि क्या होगा? Using external resources. Okay. Anyone else? बोल दो माइक ऑन करके, तो टाइप कर दो, कोई नहीं. Who cannot interpret ki anything from external dependencies, give me a thumbs up. बताओ यार, रिस्पॉन्ड करो भाई. अरे बता दो भाई, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें.
कि if anyone can understand something that we have no access to. Okay, so let's continue. कि देखते हैं कि क्या what are external dependencies. So when you are writing certain code, obviously all the time you can't reinvent the wheel कि everything you will write from scratch. तो अगर as a developer, let's say मैंने like a math library, exactly right. तो you are right, the intuition is absolutely correct that the math library we used, dart math, तो रैंडम नंबर जनरेट करना था आपको, ठीक है. तो आई टोल्ड यू देयर इज दिस एल्गोरिथम PNRG जो भी था, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर, PRNG था, ठीक है. तो एवरी टाइम इन योर एप्लीकेशन यूजिंग और जनरेटिंग रैंडम नंबर इज़ वेरी ट्रिवियल थिंग, ठीक है. बट यू कान जस्ट गो अराउंड every time you make an application to write the whole PRNG algorithm yourself or understand it, ठीक है. Because it is very trivial thing and you want to use it every time. So some smart people or someone has already written this algorithm for you. You can just reuse it into your application. So that is how you are depending externally from your code to someone else code base, ठीक है. तो let's assume you want to use fonts, ठीक है. तो can someone tell me, has anyone ever used maybe any editing tool, Photoshop etc, या छोटा मोटा भी, and you have changed fonts there, and if you have changed, okay Arlene, if you have changed fonts there, then how do you download it from internet, or what are the font files, या कुछ किसी को भी कोई भी idea हो about fonts? TTF, right? Anyone else? So TTF is one of the format, true type font. So if you want to find any fonts, generally this is the best website, fonts.google.com. You can go and find any random font, let's say Roboto. You can get this font, download a TTF file. There are multiple formats, OTF, TTF. अगर कभी टाइम लगा अगर क्लास में और आउट ऑफ कोर्स जाके हमें TTF पढ़ना हुआ सिर्फ कि TTF फाइल्स कैसे बनती है, तो वो भी बता दूंगा मैं किसी दिन अगर टाइम लगा तो. बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि TTF फाइल्स कैसे काम करती हैं, एंड दैट्स हाउ यू रेस्टराइज टेक्स्ट, दैट्स हाउ यू प्रिंट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. क्योंकि अगर यू विल सी कि ये भी तो पिक्सल्स हैं जो मेरी स्क्रीन पे पेंट हो रहे हैं, तो हाउ आर दीज गेटिंग पेंटेड, दीज आर ऑल्सो पिक्सल्स. तो देयर इज सर्टेन लॉजिक रिटन इनटू TTF फाइल्स जहाँ से आप यू कैन एक्सट्रैक्ट द डायमेंशन एक्सेट्रा ऑफ D और A और R टू मेक देम इनटू पिक्सल्स. तो वो हमारा काम नहीं है फ़िलहाल के लिए, बट इफ़ कभी टाइम लगा तो वी विल सी. बट द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ fonts.google.com. यू कैन डाउनलोड TTF फाइल. देन व्हाट यू कैन डू इज़ इन योर analysis.pubspec.yaml यू कैन सिमिलरली जहाँ पे एसेट्स हमने डाले हैं लाइक इमेजेस, यू कैन ऑल्सो गो इन टू एसेट्स फोल्डर और कोई भी फॉन्ट्स फोल्डर यहाँ पे बना के, अपना रैंडम फोल्डर बना के, यू कैन ऑल्सो ऐड द TTF फाइल्स यहाँ पे, एंड देन यूज़ द TTF फाइल्स टू चेंज द फॉन्ट्स. दिस इज़ वन ऑप्शन, ठीक है. बट आई जनरली डोंट प्रेफर बिकॉज थोड़ा सा हेक्टिक है. दूसरी बात कि अगर यू वांट टू चेंज, यू वांट टू हैव मल्टीपल फॉन्ट्स इन योर एप्लीकेशन, देन यू हैव टू मैनेज लॉट ऑफ फाइल्स. एंड द सेकेंड वर्स्ट थिंग इज़ कि when you are adding an asset, let's say when you are adding an image into your application जो आपने लोकली डाउनलोड करी है, एसेट्स फोल्डर में रखी है, pubspec.yaml में डाली है, सिमिलरली एन ऑडियो और फाइल दिस TTF फाइल एक्सेट्रा, अगर ये आप लोगों ने डाली है, तो द इशू इज़ की व्हेन वी कंपाइल एन एप्लीकेशन, तो जनरली 30 MB 50 MB 20 MB की एप्लीकेशन होती है, ठीक है. तो जो आपने जितना भी कोड लिख दिया अपनी डार्ट फाइल्स में, दैट फ्लटर कैन ऑप्टिमाइज फुल. तो अगर आप जितना कोड लिखोगे अपने प्रोजेक्ट का साइज होगा 99.9% ऑफ द कोड विल बी शेकन. शेक कैसे होता है, क्या होता है, वी विल डिस्कस इन लास्ट क्लास. बट बेसिकली इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू 0.2% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट का साइज टू एन एप्लीकेशन. तो वो इतना छोटा हो जाता है. दैट्स व्हाट फ्लटर डज एट द एंड फॉर यू. बट फ्लटर क्या नहीं कर सकता कि इमेज का अगर 5 MB का साइज़ है, तो वो 5 MB की 5 MB ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कंप्रेशन लगा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, बट वो 5 MB की 5 MB ही आपके उसमें चली जाएगी, ऐप के साइज़ में इंक्रीमेंट कर देगी. तो अगर आपका बेस ऐप बना है लेट से 20 MB का, अगर आपने 10 इमेजेस डाल दी 2-2 MB की, तो 20 MB डायरेक्टली बढ़ जाएगा, तो 40 MB हो जाएगा.
तो TTF फाइल्स अगर आप डायरेक्टली डालोगे 200 KB की 400 KB की 5-6 फाइल्स डालोगे तो ऑब्वियसली 1-2 MB डायरेक्टली साइज बढ़ जाएगा. एंड व्हाट नाउ वी हैव टू डू इज़ टू यूज़ इंटरनेट. जैसे कि हमने इमेजेस के साथ करा था कल, इमेजेस डॉट नेटवर्क के साथ हमने वी फेच द इमेज डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट. इंस्टेड कि हम उसको एम्बेड करें, एसेट्स पबस्पेक में डालें, अपने फोल्डर में रखें, एंड देन उसका आपका साइज़ बढ़े. लेट्स से यू मेड वांटेड टू मेक 1,000 लिस्ट ऑफ 1,000 पीपल, 1,000 मूवीज़ लास्ट नाइट. तो अभी तो 5-10 बनाई होंगी आप लोगों ने, बट लेट्स इफ़ यू वांट टू मेक 1,000 ऑफ देम, and if you download all the 1,000, add it into PubSpec, then compile the application size would increase significantly. Obviously इससे फ़ायदा ये है कि it is locally embedded, तो इंटरनेट की ज़रूरत, अगर इंटरनेट नहीं है तो then there is no issue. But if you don't want to increase the size, then you can obviously fetch it from internet. ठीक है, one thing. अब similarly we will do it for fonts, if we want to. So to do this for fonts, there should be an algorithm in your app that automatically fetches the TTF file, automatically embeds into your application, then automatically displays it. ठीक है, ये सारा कुछ करना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी कॉमन यूज़ केस फॉर ऑल द एप्लीकेशंस कि इंटरनेट से फॉन्ट्स यू नीड टू फेच. तो यू जस्ट कांट राइट दिस होल एल्गोरिदम बार बार इन योर एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन बना रहे हो. तो ऑब्वियसली गूगल के इंजीनियर्स ने हु मेड फ्लटर ऑल्सो मेड अ पैकेज or external dependency or some code on the internet which you can download directly in your application, and उसके बाद use that code or that abstraction layer to just simply write 2 or 3 lines to do all of this process for you. कि it will go download the font, cache it, store it in your machine or somehow whatever it does, but you get the point, right? So let's see. There is this website pub.dev. This is an interesting website. It is named Pub, and Pub is a package manager for Dart. So what is a package? That's what we discussed कि जो Google ने जो मतलब let's say as me an engineer, मैंने एक issue face करा कि ये सारा कुछ manually करना पड़ता है. Let's make a package, deploy it on internet, and now lot of people can download it in their code base and make their lives easy to don't write this code again and again. That is a registry, a place where people can come and register their packages and store it on the internet for other people to use. ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है कि what is pub.dev and what I just said from last 5 or 10 minutes कि बताओ. Yeah, so let's look into this website. You can see it tells to search packages. Let's search this package Google Fonts. You can see this package appeared Google Fonts and it has 2.16 million downloads. Total or weekly I'm not sure. नहीं, weekly कम है, 500K कुछ है, but that's a big number. Total 2.16 million downloads. So basically 2.16 million different apps is using this package. ठीक है, so that is what was anticipated to happen. But you can see कि you can download this certain code जो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है into your application and then you can use it. ठीक है, let's see what this does. So as you can see, this is the documentation and it tells to what to do using this. Once installed, how we will do it, we will see it. But once installed, you can do text, then write your text which you want to do. But यहाँ पे style we were adding text style है ना. Last night we did this. अरे बहुत जल्दी चला जाता है text style. ठीक है, but instead you just need to replace it with Google Forms dot the font name. तो जो ये font का नेम है यहाँ पे रोबोटो है, तो you just need to write roboto here. Automatically it will style and change the font for you. That's it. That's the only thing you need to do. बाकी जो styling करनी है font size वगैरह, place it inside here. Similarly you did with text style. ठीक है, that's it. जैसे ये you can do टेक्सटाइल यहाँ पे डाल सकते हो दोबारा, तो डॉट लैटो के बाद टेक्सटाइल, फिर नॉर्मली जो टेक्सटाइल आप डालते हो वो डालते रहो. ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन. यू कैन रीड द होल डॉक्यूमेंटेशन. इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट नाउ वी जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस पैकेज इनटू आवर एप्लीकेशन एंड देन यूज़ इट. ठीक है, तो लेट्स कॉपी दिस and go to pubspec.yaml.
दिस इज़ व्हाट वी लेफ्ट, डिपेंडेंसीज और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज यहाँ पे डालनी. तो देर इज़ ऑलरेडी वन डिपेंडेंसी विच इज़ नेम्ड Cupertino icons, and these are already added in the project by default. What are Cupertino icons? These are, as you have noticed, कि जो icons का design होता है in Android and iOS, they are different. So that's why Flutter already has made a package to incorporate Apple की design language के icons into your application. So that is what it provides. इसको हम हटाते हैं and let's add our package जो हमने copy करा है, Google Fonts और Google underscore fonts. ठीक है, तो let's write 00 for a second. Cool. तो what I wanted to say कि हाँ, जैसे ही मैंने फाइल को सेव करा, इट ऑटोमेटिकली पुल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट. एज यू कैन सी यहाँ पे देयर वाज अ पॉपअप, बट दिस इज़ अ GUI जो फ्लटर हेल्प, सॉरी, हमें VS कोड हेल्प कर रहा है. बट इफ़ यू वांट टू डू इट मैनुअली, फ्लटर पब गेट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट टू पुल एनी चेंजेस. कि अगर यहाँ पे यू हैव चेंज द वर्जन वगैरह एंड यू हैव टू अपडेट इट, you just have to write flutter pub get and it will automatically do it for you. So I will write this and it will pull anything from the internet which you want to do. ठीक है, अब जो ये कोड मेरे पास आया है, मतलब जो भी गूगल फॉन्ट्स की जो ये लाइब्रेरी है, जो भी गूगल ने लिखी है, जो ये मेरे पास कोड आया है, ये मेरे कोड बेस में तो कहीं दिख नहीं रहा है. बट द पॉइंट इज़ कि ये कोड बेस में नहीं दिखता है टू डिक्लेटर एवरीथिंग. इट इज़ लोकेटेड हेयर. इफ़ यू आर ऑन विंडोज़, तो दिस इज़ अ लोकल वेरिएबल, लोकल ऐप डेटा करके. इफ़ यू आर एबल टू फिगर इट आउट, डू इट. बट /pub/cache एंड मैक एंड लिनक्स पे ऑब्वियसली .pub-cache इन योर होम फोल्डर डायरेक्टरी. यहाँ पे एक कोड पड़ा होता है. दिस इज़ अ कॉमन कोड इंस्टॉल्ड. तो अगर लेट से कल को मैंने एक बार ये पैकेज का ये वर्जन डाउनलोड कर लिया 6.0.0, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड करके रख लिया, लोकली मेरी मशीन पे है. कल को मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मैंने ऐड करा, तो वो लोकली डाउनलोड हुआ, मतलब इंटरनेट से डाउनलोड हुआ. कल को मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे दोबारा इंटरनेट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी सेंट्रलाइज्ड मशीन के सेंटर में कहीं पे पड़ा है. तो यू कैन जस्ट रेफरेंस इट फ्रॉम देयर. कॉपी नहीं कर रहे हम, एक ही जगह पड़ा है, जस्ट रेफरेंसिंग इट कोड वहाँ पे. ठीक है, इतना समझ में आया सबको क्या हो रहा है कि हमने क्या करा अभी, कि गूगल फॉन्ट्स की इस पर गए pub.dev/packages/google fonts. यहाँ से हमने पैकेज कॉपी करा, उसके बाद हमने यहाँ pubspec.yaml में ऐड कर दिया. एनीवन हैज़ एनी इश्यूज़ यहाँ तक? बताओ. करण, कविश, सुजल, ओके. आई एम एज्यूमिंग कि देयर आर नो इश्यूज़ बिकॉज अभी तक हमने कुछ कॉम्प्लेक्स करा नहीं है. एंड yeah, that's it. One thing, let's understand this 6.0.0 versioning, how versions are made generally. There is no strict rule to do this, क्योंकि eventually you will be making your own applications. अच्छा, ये तो पैकेजेस हैं, एप्लीकेशंस के भी तो वर्जन्स होते हैं. कहाँ हैं वो एप्लीकेशन के वर्जन्स? यहाँ पे है, ये रहा. आपकी एप्लीकेशन का वर्जन है 1.0.0 +1 हटा दो फिलहाल के लिए, 1.0.0. अब you will eventually publish a new update into application and increase the version to, let's say, 2 or 3 or 4. तो how generally it is done, let's look into it. ठीक है, थोड़ा सा कि 6.0.0 का मतलब होता है दिस इज़ 6, जो पहला मतलब करेक्टर है, दिस इज़ meant for major updates, this is meant for minor updates and this is meant for patch updates. What do you mean by that? जो लास्ट में है बिल्कुल, जो ये वाला है. सो दिस इज़, अगर छोटा मोटा कोई बग होता है या कुछ चेंजेस होते हैं, तो दिस इज़ बम्प्ड अप टू, लेट्स से अब राइट नाउ इट इज़ 6.3.3, तो इट विल बी बम्प्ड अप टू 6.3.4. अगर कोई माइनर चेंज, मतलब छोटा मोटा बग फिक्स करना है या पैच लगाना है कोड में, ठीक है. देन दिस वन जो सेंटर में है, दिस इज़ फॉर माइनर चेंजेस. तो माइनर चेंजेस इन द सेंस कि कुछ नया फीचर ऐड हुआ है या कोई नई चीज़ ऐड हुई है, बट जो पुराना कोड लिखा हुआ है मैंने, मतलब अगर मैं 6.3.3 का कोड लिखा मैंने, वैसा ही कोड मैं अगर 4.3 में भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कोई ब्रेकिंग चेंज नहीं है. मतलब जो लिखने का तरीका है कि गूगल फॉन्ट्स डॉट लैटो या गूगल फॉन्ट्स डॉट रोबोटो, वो चेंज नहीं हो रहा है. अगर यहाँ पे जब ये वाला बम्प होगा विच इज़ अ मेजर चेंज, दिस मीन्स कि देयर कैन बी ब्रेकिंग चेंजेस. मतलब कोई ऐसा चीज़ हो सकती है कि अगर आपने कोई सर्टेन कोड लिखा हुआ है विद ये वाला पैकेज का नंबर कि 6.0.0 और कल को 7.0.0 आ जाता है, तो देयर कैन बी, नॉट नेसेसरीली, देयर कैन बी सम चेंजेस जहाँ से आपका पुराना लिखा हुआ कोड कैन बी
ब्रोकन डाउन, मतलब वो ख़राब हो सकता है, यू हैव टू री राइट फॉर द लेटेस्ट पैकेज. देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जनरली नहीं होता है, बट दिस इज़ फॉलोड एवरीवेयर. दिस इज़ कॉल्ड सेमेंटिक वर्जनिंग. आई गेस मैंने कहीं लिखा भी होगा. या दिस इज़ कॉल्ड सेमेंटिक वर्जनिंग एंड दिस इज़ पॉपुलरली यूज्ड एंड जनरली हम अपनी एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं या अपने रिलीजन में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, राइट. व्हाट इज़ दिस? एनीवन नोस कि इसका मतलब ये क्या है, ये क्या नहीं करता क्या है? वी विल डिस्कस इट लेटर. बट जो मैं टाइप करता हूँ अपने कीबोर्ड से ये वाला, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? जैसे दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? एनीवन नोस? जो एक्सपोनेंशिएशन वाला साइन होता है, कैरेट, राइट. सो इट इज़ कॉल्ड एन कैरेट एंड दिस, या अगर ये हटा दोगे आप तो इट विल पुल द एग्जैक्ट वर्जन 6.0.0 फ्रॉम द इंटरनेट जो अवेलेबल है. बट अगर मैं कैरेट लगा देता हूँ तो इट कैन पुल एनी वर्जन आफ्टर 6.0.0 एंड बिलो 7.0.0. मतलब कि अगर मेरे कोड बेस में 6.0.0 है, ठीक है, अब कल को गूगल फॉन्ट ने निकाल दिया 6.0.1, उसमें कुछ नए चेंजेस हैं या कुछ फिक्सेस हैं, तो मतलब इट इज़, मुझे तो क्या करना पड़ेगा कि ट्रैक रखना पड़ेगा जाके गूगल फॉन्ट्स के उस पे पेज पे कि नया वर्जन आया है या नहीं, और मैं जाके अपडेट करूँ. ये तो मैं नहीं करूँगा. तो व्हेन यू अप्लाई दिस कैरेट, तो अगर इसके ऊपर भी कोई वर्जन एग्जिस्ट करता है, 6.0.0 के ऊपर भी कोई वर्जन एग्जिस्ट करता है जो मैंने नहीं लिखा है, तो इट ऑटोमेटिकली पुल्स द लेटेस्ट वर्जन जो वहाँ पे है. बट इट डज़ नॉट पुल्स, अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 डाल दूँ, ठीक है, 5 डाल दिया मैंने. अब यहाँ पे अभी चल रहा है 6th वर्जन, ठीक है, तो अब कैरेट लगाने के बाद इट विल पुल द लेटेस्ट वर्जन जो 6 से पहले पहले तक का है. तो लेट्स अज्यूम 6 से पहले पहले था 5.99, ठीक है, तो इट विल पुल 5.99 एंड नॉट 6. बिकॉज वाई? बिकॉज 6 इज़ अ ब्रेकिंग चेंज, इट कैन ब्रेक एनी स्टफ इन योर कोड, दैट्स वाई. तो जो ये वाला बम्प है, दिस इज़ ब्रेकिंग चेंज, दैट्स वाई वी आर नॉट पुलिंग दैट. दिस इज़ हाउ द सेमेंटिक वर्जनिंग वर्क्स. दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. गूगल फॉन्ट्स का पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं इन योर application, right? Let's see this in action and let's create some text. थोड़ा इसको simplify कर देते हैं, stack वगैरह हटा देते हैं and let's make a simple column. Children, let's make some text and hi there and let's add style जैसे हम normally करते हैं, but with Google Fonts dot my font name जो भी मुझे डालना है. लेट्स ऐड रोबोटो मोनो, माय बैड, ठीक है, या फिर रोबोटो डालते हैं. एंड लेट्स ऐड नाउ द टेक्स्ट स्टाइल जो हमें डालना है. तो फॉन्ट साइज 24. एनीवन इस सिंटेक्स में कोई इशू? देख लो एक बार, सेम चीज़ है. दिस इज़ द सेम थिंग विच वी आर डूइंग. I just wrapped it with this Google Fonts.roboto. Roboto is the name of the font, and now we will reload this application and see if the font is changed. See, now it is using Roboto font. Let's try to, okay, path provider missing plugin. एक बार we will kill the application, rerun this. It is not using Roboto font by default, ये वाला है अभी. Let's wait for it एक बार to rebuild the application. ओके, आई गेस ये इशू आपकी मशीन में नहीं आएगा. इट इज़ जस्ट इन माई मशीन बिकॉज देर इज़ सम 2-3 जावा के वर्जन इन माई मशीन बिकॉज आई वर्क विद जावा ऑल्सो, तो दैट्स वाई दिस इज़ लाइकली टू डू एरर बगेन. ठीक है, एनीवन इफ़ यू कैन कन्फर्म मी कि आपकी मशीन में ये नहीं आ रहा? नहीं आएगा, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज यू गाइज हैव ओनली 1 जावा वर्जन. आई हैव 2 to 3 आई गेस. Okay, meanwhile it is building. I also have a package on the registry. You can also go and make a package if you find it useful and publish it on the registry of pub. It is mine one is named numd,
made it 10 months ago. It has more than 5 downloads, I'm pretty sure, but पता नहीं कि कौन से टाइम का स्टैट्स दिखाता है. 500-600 डाउनलोड्स होंगे, दैट्स इट. But the point is कि this is a package. If you guys have heard NumPy in Python, anyone? Yep. Priyansh, Ankit. Can anyone tell me what it does? बताओ. किसी को नहीं पता what it does? Array, data analysis related to data manipulation. Yeah, right. So it talks to, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा सा बता देता हूँ बस. बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ यूज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सेसिंग द GPU. बाकी डिटेल में किसी दिन और देखेंगे क्या होता है. बट दिस इज़ एन एग्जैक्ट रेप्लिका, नॉट विद ऑल द फीचर्स ऑब्वियसली. उस पर तो बहुत बड़ी टीम बैठी है. दिस इज़ एन रेप्लिका ऑफ NumPy in Dart. So it just gives almost same functions, bare minimum ones to you. So यहाँ पे एज यू कैन सी कि मेरे पास ओनली, मैंने 3 ही वर्जन अपग्रेड करे हैं, उसके बाद कुछ नहीं करा. तो यू कैन सी कि यू कैन क्रिएट एन एरे, देन मे बी मल्टीप्लाई इट एक्सेट्रा होगा नीचे बहुत कुछ. तो दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन वन कैन रीड in it, and then you can see the linear algebra dot matmul to multiply these two arrays, etc. So you can use this also in the library. Baki my application is built, I guess, almost. And let's see ki if it is using the font. Let's try to change it to some unique font. किसी को कोई ऐसे उल्टा सीधा फॉन्ट पता है कुछ जो गूगल फॉन्ट्स पे हो? यहाँ पे sans serif, let's look into it. Yeah, serif, I guess PT serif is available. ये डाल के देख लेते हैं. Comic sans, right, let's go. If it is available on Google Fonts, let's see. Yeah, comic new is available. It is very similar. Let's use this. See, the font changed, and yeah, that is what I wanted to show. Ki now you can add different fonts into your application using Google Fonts. This is one of the package. Now you can go and you have the whole library of Flutter Dart developers and Flutter developers publishing their packages into this registry, and you can just go and explore and add a lot of things into your application if you go and read the documentation. So let's do a random search. Let's search cards. I guess Firefox का issue है ये. It is थोड़ा कभी कभी करता है. Let's open Chrome. Yeah, it would be much faster, I guess. Yeah, let's search random card. See, Flutter card swiper. ठीक है, there is a random package 7.2.0 on 7.2.0 version. ठीक है, a lot of downloads also. You can see you can easily make these animations. You are not making these animations, someone has already made this animations. You can just go and download his code into your application and use it. How? Let's see a simple example. I'm not going to integrate this, but we will see how to read these and how to do this when required. ठीक है, तो मुझे कार्ड्स के रिलेटेड कुछ चाहिए था, मैंने कार्ड सर्च करा. आई गॉट अ लॉट ऑफ पैकेजेस, वन ऑफ देम लुक्स इंटरेस्टिंग. आई विल ऐड दिस इनटू माय pubspec.yaml. Then let's see what it does if we are able to see. So this is a new widget which does not exist. He made this, so you can just use this widget now after adding the package card swiper करके. And the card counts, obviously card.length, कितनी आपको लेंथ चाहिए. तो the cards are here maintained in a list. This is a list. We discussed list of ints last night. This is list of containers. You can also make list of widgets. So it has different widgets, one container 1, container 2, container 3 combined into a list. Then it is passing the length of this list here, cards.length, to this,
And similarly we have item builder, there is a card builder which he made. तो कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स जैसे उसमें होते हैं परसेंट थ्रेशोल्ड एक्स परसेंट थ्रेशोल्ड वाइड, ये क्या है वी विल सी आगे. एंड नाउ वी जस्ट हैव टू पास इन द कार्ड, मतलब जो ये लिस्ट का नाम है कार्ड्स, इसमें जो इंडेक्स है रैंडम वो हमने डाल दिया. तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन. यू कैन नाउ सी कि इसमें जो वो ही टोल्ड की अदर जो पैरामीटर्स इट एक्सेप्ट्स की कार्ड बिल्डर हो गया, कार्ड काउंट हमने देख लिया, कंट्रोलर ड्यूरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू कैन लुक इन टू इट, रीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़ दिस होल थिंग इन टू योर एप्लीकेशन एंड मेक समथिंग लाइक टिंडर काइंड ऑफ जो भी होता है. आई एम नॉट श्योर कि आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब स्वाइप वगैरह कुछ तो होता है, बट या लेट्स ऑल्सो सी समथिंग इंटरेस्टिंग. लोडिंग मेरे दिमाग में अभी या सो एनिमेटेड स्विच टॉगल. You can see कि these switches are nicely animated. You can directly use them into your application by doing the same process and just writing animated toggle switch instead of just a toggle switch, right? Similarly, you can explore this pub.dev and see a lot of packages into from it. ठीक है, and let's move आगे क्या है into today's class. pub.dev, right? Yeah, so I want to suggest, because UI UX की class है, तो I would suggest some top tier fonts which are very professional and used by a lot of applications. And I feel कि these works all the time from all the applications. These are very professional and let's see some of them. Inter is very good font and anyone, अगर किसी ने भी जैसे जैसे मैं स्लाइड्स आगे स्क्रॉल करूँगा, अगर किसी ने फॉन्ट सुना हुआ पहले इंटर, तो एक बार चैट में डाल देना, ठीक है, कि विच फॉन्ट हैव यू हर्ड ऑफ, तो इंटर टाइप कर देना. इफ़ समवन हैड हर्ड ऑफ इंटर तो एक बार बता दो. बाकी नेक्स्ट वी हैव प्लस जगाता साइंस. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, वेरी गुड फॉन्ट. देन वी हैव जीस्ट जगाता, येस. देन वी हैव दिस एप्पल के फॉन्ट्स विच आर SF Pro and this is one of the best typographies ever made by any company. SF Pro is very good. Then we have Manrope, Roboto, this is made by Google, and SF Pro, yes, right. And yeah, that's it. These are some good recommendations by me. You can go explore Google Fonts की website and do it. जैसे हमने comic new लगाया अभी, तो you can go around and play with it, right? I used it in my day 3 assignment. How you applied it, Kamaljeet, using Google Fonts or assets? Hello? Normally, sir. Okay. My phone died. Okay, cool. Interesting. Let's go. And yeah, next is animations in Flutter. Animations is a very big topic and there are a lot of things to go into, but we will discuss कि enough required to make normal applications. इसके बाद की चीज़ें बनानी है, तो अगर obviously time बचा तो I will plug them in कि अगर हुआ तो, but let's see. Animation just values changing over time. तो as I told you कि Flutter is also just it runs at 60 frames per second and then उसके बाद it just checks कि next frame पे मुझे कौन सी widgets rebuild करनी है. But when you are animating something, let's say scaling a circle from 0 to a large size, then you always have to do that कि बिकॉज एनिमेट हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक फ्रेम में 60 फ्रेम्स हैं अगर, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हर बार हो रहा है. तो आपको हर फ्रेम में you have to rethink, you have to rescale, you have to recalculate and you have to repaint the pixels. So you can understand this is an expensive process compared to just updating states etc. because वो हर सेकंड चेंज नहीं हो रही है. मैं बटन हर सेकंड नहीं दबाई जा रहा हूँ, दबा सकता हूँ मैं खैर, बट अगर मैं हर सेकंड नहीं दबा रहा हूँ तो स्क्रीन स्टैटिक है, मैं 10 सेकंड के लिए स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो देयर इज़ नथिंग चेंजिंग, देयर इज़ नथिंग रिकैलकुलेटिंग. बट अगर कुछ एनिमेट हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज रिकैलकुलेटिंग. 60 फ्रेम्स हमेशा रिकैलकुलेट हो रहे हैं. दैट इज़ वाई दे आर एक्सपेंसिव. लेट्स सी. वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू डू कि अगर मुझे छोटी मोटी एनिमेशंस बनानी है, तो दे आर ऑलरेडी प्री मेड प्रिमिटिव्स लाइक एनिमेटेड कंटेनर. लेट्स लुक इनटू इट. यू नो कंटेनर्स. लेट्स मेक वन कंटेनर. Let's make some container with width
10 height छोटा हो जाता ना 10, let's make it 100. Then let's give it a color, colors dot amber, and then we can give it a child with center etc जिसमें hello world लिखा हुआ है. Let's restart the application. Let's look into what we have. Yeah, okay, so we have this container. Let's also center this container. Let's remove this. You can just click here, remove this widget, add a new widget, name it center, and now it is at center. Okay, I just forgot, हमें वो रखना ही पड़ेगा. Never mind. Main axis alignment dot center, cross axis alignment dot center. ठीक है. Now it is here. It is good enough. इतना is all right. Now let's do one thing कि make a button. Let's make a button. Elevated button, then on pressed, then child is some text, press me. Cool. Nah, so now we have to animate this container. Let's see how we can do it in the easiest possible way. So you just have to replace this container with animated container. That's it. अरे भैया आजा. हाँ, so you just have to replace this container with animated container, and it just takes an extra parameter which is called duration, for how many times you want, how many seconds you want to animate this container. ठीक है, तो duration seconds 1. Cool, ये नाम ने कर लिया. अब it will automatically animate without doing anything when certain values in the properties of this container changes. तो अगर मैं इसको somehow programmatically width को 100 से 200 कर दूँ तो it will eliminate the width automatically. ठीक है, let's try to do this. Here is one of the examples. तो let's make a variable int let's say width container 200, and instead of, let's make this final, or let's make this stateful first because we are animating something, so the state is changing, so that's why. Let's take this width, instead of writing 100 hard coded here, let's make this like this to double. Cool, we did this. ठीक है, अब yeah, so it automatically suggested कि when we press the button, when I will press this button जो हम बनाएंगे, I will just change the width from 100 to 200 by pressing that button. मतलब width कैसे change होगी, just we will change this variable automatically. Variable change होगा तो जो यहाँ पे value जा रही है वो भी change हो जाएगी. तो अब animated container will automatically detect कि कोई value internally change हुई है, तो it will animate based on that for 1 second because we defined it 1 second. ठीक है, let's change the state, and this is simple logic, width container plus 50. ठीक है, let's press me. See, the width increased, but सीधा width increase नहीं हुई, it automatically क्या कहते हैं animated also into ठीक है. Cool. You can now change any parameter inside this, or maybe also height also. ठीक है, let's also define a color container color, colors dot amber, and let's add container color here. क्या spelling है यार, color container, my bad. And now you can change a lot of things यहाँ पे कि color container color to purple. So let's restart the application, and see, so everything is animating. The color जब change हुआ तब it also animated. ठीक है, so this is cool. इससे हम basic animations we can make. Interesting. Next is animated scale and opacity. Similarly, like animated container, we have a widget called animated scale and animated opacity. Similarly, it takes a normal child, इसमें कुछ भी डाल दो. Then we have duration and another parameter because it is animated opacity. So you can change the opacity, the translucency of this container based on this.
ये थोड़ी प्रिमिटिव सी हैं, यू कैन यूज़ इट ऑन सर्टेन पैरामीटर्स जब भी आपको यूज़ करनी हो. सिमिलरली फॉर स्केल, इट टेक्स स्केल एंड इट इंक्रीजेस इट फ्रॉम parameter of 0 to 1. You can try it yourself. There is nothing complex in this, very similar. Now this is something which we need to understand थोड़ा अच्छे से, which is animated controllers. ठीक है, these were primitive animations जो हमने अभी करी, but we might want full control on our animations. That's why we might want to make a controller. Let's see what is a controller, etc. But let's read the definition. An animation controller is a clock that goes from 0 to 1 over time. तो वी डिफाइन कि क्लॉक कब चलेगी, कब बंद होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल जस्ट ऑटोमेटिकली चेंज इट्स वैल्यू. लेट्स assume there is a variable named animated controller which has a value of 0 when starting. When I ask it to कि 3 सेकेंड बाद you start increasing, तो it will automatically increase from 0 to 1 in the duration of 3 seconds. Based on this value of 0 to 1 we can animate things हमारी मर्जी से. Let's see it in action, it would be way better. Remember inheritance. Sorry अगर if someone वो oops वाली issue है किसी को, but the point is कि we have to see another thing which is Mixins. Yeah, so one thing, can someone think of what can be multiple inheritance? We discussed inheritance, that class B and class A. Class A can inherit from class B. Class B could be the parent and class A could be the child. So it will have the properties of class B also and its own properties also, class A. ठीक है, तो what do you feel is multiple inheritance from first principles, or by thinking the name multiple inheritance? Speak or add in chat. बताओ. Anyone understands what is inheritance? पहले तो बताओ. In classes, having multiple functions called in one function. Okay, anyone else? Having properties of multiple classes. Multiple classes की properties inherit करेगा. Extends multiple classes at once. The child inherits the properties of parent. Right, most of you are right that जैसे कि पहले क्या हम कर रहे थे कि this is C and this is A, तो when C inherited from A, it had C की खुद की properties तो हैं ही, A के properties it will also inherit, right? But you can also do certain things in languages like C++ or Rust, that you can do multiple inheritance, where you can make two parents A and B and inherit the properties of both in C, just like a family tree where there is a mother and a father and the child has properties of both, right? So you can do this in most of the languages, A and B, and it inherits from C. C inherits from A and B, its properties, but you can't do this in Dart. But there is a solution to this which is called Mixins, and Mixins is an interesting thing where you can inherit from one class. एक class से तो आपने inherit कर लिया, अब if you want कि कोई और class की भी property मुझे चाहिए, तो you can just embed them and kind of like an injection into your class. तो अलग क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, you can just embed them into class. It is very similar to multiple inheritance, but because when Dart बनी थी तो उन्होंने multiple inheritance का ध्यान दिया नहीं था, तो they eventually added a fix called Mixins. Let's look into थोड़ा सा इसका code. तो this is as you can see class person. अभी के लिए logger छोड़ दो, ये let's remove this logger, ठीक है. And this is a person which can walk. Then there is a robot, इसको भी हटा दो, which can compute. You could have done कि यहाँ पे extended it with यहाँ पे person, तो person could be the parent of computer. One thing is this, ठीक है, this is simple inheritance, but you can inherit via a mixin also. कि जैसे यहाँ पे you can create a, instead of creating a class, you can create a mixin named logger. You can similarly add functions as you do in class, very similar everything, and just then you can just inherit from a mixin and embed its properties. As you can see कि यहाँ पे हम extend कर रहे हैं, तो class A is extension of B and B, इसको हटा दो अगर फिलहाल तो single inheritance में, which means कि B की properties A में आ रही हैं, A is just an extension of B. तो as I'm a child, I'm a extension of my parents, but this is a mixin, this is with the keyword already defines कि क्या हो रहा है. It is just injecting some variables or properties into person, right?
we'll see this ki where we are using and why I'm talking about this. But one thing I want to do is कि you see, अरे यार, one second, what I was doing कि इसको बंद कर दें पहले, ये रहा, cool. हाँ, तो दो जो ये स्टेटफुल विजिट है, एक मिनट, ये रहा ना, हाँ, सिंगल टिकर प्रोवाइडर, तो वी नीड टू विद सिंगल टिकर प्रोवाइडर मिक्सर. एक बार के लिए लेट्स सी कि क्या हो रहा है कि जो दिस इज़ द स्टेट क्लास जो हमारे पास है, जो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे स्टेटफुल विजिट में, देन इट एक्सटेंड्स, मतलब ये इनहेरिटेड है इससे. बट अब मैं कोई और प्रॉपर्टीज किसी की इनहेरिट नहीं कर सकता हूँ, तो आई विल यूज़ दिस मिक्सिन ऑलरेडी made by someone else from the Flutter team, single ticker provided state mixin. We'll discuss about this, but you just need to add this for now, treat it as a black box ki this we have to add when we have to make animation controllers, not animations, right? One second. हाँ, तो we were कि sorry, we have to add single trigger provider mixin, state mixin, जो भी लिखा हुआ है. We will discuss about it कि what it is, कि as the name suggests, single ticker provider. It provides you a single ticker. What is a ticker? Ticker is a clock which we discussed कि जो चलेगी when we will tell it कि 0 से 1 होना है तुम्हें. तो it will provide Flutter की जो state है, state class है, sorry, ये वाली, with a single clock, which means we can use a single animation, we can make a single animation controller using this. ठीक है, let's look into the code. Let's try to पहले implement, then we will understand थोड़ा better. Let's make this, क्या कहते हैं इसे, animation controller. पहले late final, yeah sir, let's make सिर्फ late animation controller. We will discuss about everything. Just let me write the code पहले, ठीक है. कूल, लेट्स जस्ट डिस्कस कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है. पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है नॉर्मल, जैसे ये बनाया है वैसे यहाँ बनाया है, एनिमेशन कंट्रोलर, जो इसकी डेटा टाइप नेम्ड कंट्रोलर. जस्ट इसके आगे लेट लिखा है. लेट इज एज सेम एज फाइनल, बट वी जस्ट आर इन्फोर्सिंग कि अभी मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है. आई विल इवेंचुअली ऐड इट, बट आफ्टर एडिंग आई विल नॉट चेंज इट. ठीक है, सो लेट्स मेक इट लेट फाइनल, इट इज़ कूल. ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि वी विल इवेंचुअली ऐड दिस वैल्यू. वाई विल इवेंचुअली ऐड दिस वैल्यू. अभी स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाल सकता एनिमेशन कंट्रोलर में जो भी मुझे वैल्यू डालनी है? बिकॉज आई रिक्वायर अ टिकर फॉर इट. टिकर, व्हाट इज़ अ टिकर? टिकर इज़ एज वी डिस्कस्ड अ क्लॉक. ठीक है, अब ये कब आएगी मेरे पास? व्हेन द विजिट इज़ बिल्ट. ठीक है, अभी बिल्ड वाला फंक्शन यहाँ पे है. ठीक है, ये बाद में, ये कब जब ये विजिट बनेगी तब आएगा. बट उससे पहले देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड इनिट स्टेट, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिखते. बाय डिफ़ॉल्ट इतना सा लिखा होता है, बिल्ड फंक्शन होता है. यू कैन ऐड दिस इनिट स्टेट फंक्शन. दिस रन्स व्हेन द स्क्रीन इज़ बीइंग बिल्ट. पहली बार, सिर्फ ओनली वन टाइम, व्हेन द ट्री इज़ बीइंग बिल्ट, जो हमने डिस्कस करा था इन द स्ट्रक्चर, जब ट्री बन रहा होता है तब दिस फंक्शन इज गेट्स कॉल्ड. ठीक है, तो फॉर दिस टू वर्क, सो जब ये फंक्शन मिलता है उसके बाद ही वी कैन गेट द टिकर जो इंड्यूस हो रहा है फ्रॉम द मिक्सिन. ठीक है, दैट्स वाई अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है एनिमेशन कंट्रोलर की. वी विल ऐड इट लेटर इन द इनिट स्टेट फंक्शन. Init state, as the name suggests, when the state initiates for the first time, this function gets called. Let's first try to just do this ki in this function I will write random print initial state called init state called. ठीक है, ये super dot init state क्या है? For people who know what is oops, it is just calling the constructor of your parent class. If for someone who doesn't understand you, it is just a black box for you right now. Don't try to overthink it. ठीक है, let's restart the application and see क्या होता है. Just made this function init state, इसमें wrote init state called. ठीक है, तो I guess the screen is built. उसके बाद as you can see
init state called, so it एक ही बाहर चला when the tree was made. ठीक है, cool. Let's remove this and let's assign this controller जो हमने यहाँ पे controller बनाया है. Let's assign this the value. क्या वैल्यू? एनिमेशन कंट्रोलर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, दैट्स इट. ठीक है, ये वाला. एंड इट टेक्स टू पैरामीटर्स, वी सिंक एंड ड्यूरेशन. ड्यूरेशन तो यू अंडरस्टैंड कि फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, एज वी डिस्कस्ड कि दिस इज़ अ टिकर 0 से लेके 1 तक चलेगा. एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन इट विल रन आई विल डिफाइन. तो एक सेकेंड में ये 0 से 1 हो जाएगा, राइट. ओके, and this is the parameter vsync this. So vsync this is something which we need to, you can treat it as a black box, but I will tell you what it is. कि vsync में क्या होता है कि because I told you this is an expensive task. What is an expensive task? Animating stuff is an expensive task because हमें हर frame में recalculations करनी पड़ रही हैं. So that is tough, though it drains a lot of CPU power and hence battery. So that's why you need to sync the animation with the widget you are trying to animate. ठीक है, you are trying to animate this widget, you need to sync your animation with this. How? It is obviously done by Flutter automatically, but आपने कभी वो कैथोड टीवीज़ वगैरह देखे होंगे, तो जो स्क्रीन जब बंद पिक्सल्स जब पेंट होते हैं, दे पैरेलली पेंट नहीं होते कि एक ही बार में एक इकट्ठा पेंट हो गया है. जब कोई फ्रेम रिफ्रेश होता है या पेंट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऐसे, पहले this will get painted, then this, with this. तो ऐसे इसे sequentially पेंट होता है. हैज़ एनीवन नोटिस्ड? ये कभी कोई मूवी में देखा हो, या कोई कैथोड टीवी कोई यूट्यूब पे देखा हो, या कोई फ्रेम रिफ्रेश होता हो? यस. तो आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन हैज़ सीन दिस कि ऐसे बिल्ड होता है. ठीक है, तो वाइल इट इज़ बिल्डिंग तब रिकैलकुलेशन ना करो. ठीक है, एक तो इट इन्फोर्सेस दिस कि जब ये बिल्ड हो रहा है तब मैं कैलकुलेशन ना, मतलब तब कैलकुलेशन करते रहो, मतलब बट तब रिफ्रेश मत करो स्क्रीन को बार बार. डोंट ट्राई टू रिफ्रेश इट, कीप इट इन सिंक व्हेन इट इज़ बीइंग बिल्ट. वन. दूसरा, अगर मैंने लेट्स से ऐप मेरा चल रहा है बट मैंने पावर बटन दबा दिया तो मेरी स्क्रीन बंद हो गई. ठीक है, अब वो स्क्रीन बंद है, ऐप खुला हुआ है, वो मेमोरी में है, तो वो तो चलता रहेगा, एनिमेशन चलती रहेगी, CPU पावर ड्रेन होती रहेगी. तो वी ऑल्सो नीड टू इन्फोर्स कि जब व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टिक देन डोंट टिक. तो एनिमेशन बंद हो जाएगी वो एज यू प्रेस द पावर बटन. इफ़ यू आर सिंकिंग इट विद द स्क्रीन तो इट विल किल द एनिमेशन. ठीक है. ऑल्सो इंटरेस्टिंगली द वी सिंक की फुल फॉर्म इज़ वर्टिकल सिंक. तो एज आई टोल्ड यू कि इट वर्टिकली बिल्ड्स, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड वर्टिकल सिंक, राइट. cool. We understood it. If anyone doesn't understands कि वी सिंक क्या है, तो nothing to worry about. इसको जस्ट फ़िलहाल के लिए लिखना होता है, जितना बताना था मैंने वो बता दिया. इट इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड. ठीक है, दिस इज़ द इनिट स्टेट वाला फंक्शन. देन एज यू कैन गेस दिस इज़ ऑल्सो डिस्पोज वाला फंक्शन. व्हेन द ट्री गेट्स डिस्ट्रॉयड और द ऐप गेट्स किल्ड, देन दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड. ठीक है, तो बिकॉज यू एलोकेटेड सम मेमोरी विच इज़ एनिमेशन कंट्रोलर, you also have to safely dispose it. ठीक है, तो you have to dispose it using controller.dispose. it will dispose the memory of controller. that's it. ठीक है, दो चीज़ें हैं, init state है, build है, तीसरा फंक्शन init state है, dispose है, तीसरा फंक्शन which we are using from a lot of time which is called build, वो है. anyone has any issues यहाँ तक, या कोई पार्ट रिपीट करना हो या कुछ भी बताओ. सर एनिमेशन कंट्रोलर फिर से एक बार बता दीजिए प्लीज़. ओके, एनिमेशन कंट्रोलर बाय द नेम सजेस्ट इट कंट्रोल्स द एनिमेशंस. ठीक है, अब द पॉइंट इज़ कि मैंने यहाँ क्यों लिखा है लेट फाइनल, चाहे हटा दो, लेट एनिमेशन कंट्रोलर, बिकॉज मुझे इसकी वैल्यू अभी नहीं पता है. वैल्यू क्यों नहीं पता है? बिकॉज एनिमेशन कंट्रोलर इज़ इंटरनली जस्ट अ टिकर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 1, विच गोज़ फ्रॉम 0 to 1 बेस्ड ऑन अ सर्टेन ड्यूरेशन एंड सर्टेन टाइम. ठीक है, इतना हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि इट इज़ जस्ट अ टिकर. तो दैट्स, मुझे इसकी वैल्यू क्यों नहीं पता है? बिकॉज जो ये मिक्सिन है जो मैंने बनाया है, जो इट इज़ इंजेक्टिंग सम कोड इनटू माय ऐप. कौन सा कोड? द कोड ऑफ द टिकर. इनटू माय ऐप बोल रहा हूँ, इनटू माय क्लास. तो इट इज़ इंजेक्टिंग सम कोड ऑफ एनिमेशन और टिकर इनटू माय क्लास, बट इट इज़ नॉट राइट नाउ इंजेक्टेड. इट विल बी इंजेक्टेड आफ्टर द इनिट स्टेट इज़ कॉल्ड. ठीक है, जब इनिट स्टेट कब कॉल होगा? जब स्क्रीन बिल्ड होगी. जैसे विजेट्स बिल्ड होंगे, ट्री बिल्ड होगी, तभी इनिट स्टेट कॉल होगा. उस टाइम पे आई विल हैव द एक्सेस ऑफ द टिकर फाइनली. देन आई कैन असाइन दिस कंट्रोलर, जो कंट्रोलर हमने एम्प्टी कंट्रोलर रखा हुआ है यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमेशन कंट्रोलर डाल सकता हूँ. ठीक है, दिस इज़
1 पॉइंट. उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट ड्यूरेशन. एंड डू यू ऑल्सो नीड टू डू यू वांट टू री अंडरस्टैंड सिंक वी सिंक वगैरह एक बार, सुजल और एनीवन एल्स? नो, ठीक है. और डू यू गॉट इट कि द थिंग्स आर रिपीटेड, या आई हैव टू टेल समथिंग एल्स, या कोई स्पेसिफिक थिंग चीज़ जो पूछनी हो बताओ, सुजल या एनीवन एल्स? ओके, कूल. आई एम एज्यूमिंग कि इतना सबको समझ में आ गया, बट दिस इज़ इफ़ समवन डजेंट अंडरस्टैंड, तो फिलहाल के लिए इट इज़ जस्ट सम सिंटेक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये पता होना चाहिए कि इनिट स्टेट क्या होता है, व्हेन इट इज़ कॉल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट दिस इज़ समथिंग यू कैन ट्रीट इट एज अ ब्लैक बॉक्स. Now finally, when we have done all of this and understood all of this, we can create an animation. So you init state हमने बना लिया, animation controller बना लिया. Then we have this dispose function. Now let's create some animation. So there are certain widgets to animate things. तो let's make it a normal container पहले, तो जिससे हमारा पहले था. Let's remove this. Then I will wrap it with another widget for now, which is called scale transition. This is used for animation. ठीक है. तो what it takes is the scale. जो बट ये स्केल कहाँ से आएगा मेरे पास? बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो एनिमेशन है इट इज़ जस्ट अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, राइट? तो एनिमेशन कंट्रोलर इज़ अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, which is the ticker which ticks and increases the value from 0 to 1. ठीक है. तो it just accepts कि जो स्केल की वैल्यू होगी एज अ कंट्रोलर ओनली. कौन सा कंट्रोलर? जो हमने यहाँ बनाया है. दिस गोज़ हेयर, दैट्स हाउ इट डिसाइड्स द स्केल कि 0 से 1 में कहाँ कहाँ हुआ. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. स्केल ट्रांजिशन इज़ वन ऑफ द एनिमेशंस. देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमेशंस, जो वी कांट डिस्कस ऑल द एनिमेशंस. यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर कि कौन कौन सी हैं. एज यू कैन सी वी गेव इट अ स्केल. लेट्स change the child to the thing which we have here in this slide. Icon button. Let's make an icon button. Let's make a on pressed function also. Then add icon, icons dot favorite, colors dot red. What is wrong? Okay, ठीक है, ये ऐसे नहीं डलेगा. This will go like this. Icon icons क्या रह गया? ओके, कूल. ठीक है, एवरीवन गॉट इट कि मैंने यहाँ पे एक आइकन बटन बनाया है. देयर इज सर्टेन सिंटैक्स टू मेकिंग एन आइकन बटन, वेरी सिमिलर टू मेकिंग एलिवेटेड और टेक्स्ट बटन्स. फाइन, लेट्स ट्राई टू सी कि ऑन प्रेस में हमें क्या करना है. लेट्स मेक अ फंक्शन. या इसने ऑलरेडी लिख दिया. लेट्स जस्ट यूज़ दिस ओनली. अरे यार, लिखना ही पड़ेगा. खैर, नेवर माइंड. तो जो हमारा कंट्रोलर also gives you the access to what is happening with the animation right now. So you can check the status of the controller right now, and if the animation status is completed, then we are reversing the controller, and else we are forwarding the controller. I will tell you कि क्या हो रहा है. First let's see the animation, then we will understand. I guess most of the people understood already, but let's see the animation in action. Where is this button? ओके, माई बैड. सो द इशू इज़ कि हमने यहाँ पे स्केल ट्रांजिशन दिया है, एंड बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो टिकर है वो चलेगा हमारा 0 से 1 के बीच में, एंड मैंने इसको कहा है कि तुम्हें भाई स्केल रखना है 0 से 1 के बीच में. तो इनिशियली तो वैल्यू 0 है, एनिमेशन मैंने स्टार्ट करी नहीं, तो दैट्स वाई यू आर सीइंग कि इट इज़ 0 राइट नाउ. ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट अपर बाउंड टू टेल की मैक्सिमम कितनी जा सकती है एंड मिनिमम लोअर बाउंड. तो नाउ यू विल सी सम स्केल कि it is starting from 0.2. that's why अब size there would be hopefully a icon button. You can see there is this small button. Okay, let's change it to maybe like 0.5 and यहाँ पे 1.5 to see it थोड़ा बड़ा. See, you can see this. Now if I'll press this button, it should, okay, it is still restarting. If I press this button, it should hopefully increase the size of this. What happened? I'm pretty sure we are doing it right. Let's try कि जो वहाँ पे syntax is completed.
see, we are doing the same thing, right? कि you have this millisecond, we have this controller, we are starting this, we have this animation wala code which is similar. Okay, let's try to debug this. I'm not seeing, ये भी नहीं दिख रहा यार, क्या हो गया? अरे एक ओके सॉरी वी आर बीइंग डम्ब. हम इस बटन को दबा रहे हैं. एक्चुअली यू हैव टू क्लिक द आइकन बटन इटसेल्फ बिकॉज उसी पे ऑन प्रेस है. सॉरी. तो लेट्स क्लिक हेयर. ओके इट्स वर्किंग. So as you see, saw ki the animation scaled from, instead of 0 to 1 which we originally decided, or it is by default, it is now 0.5 to 1.5 because the scale requires to be मतलब कुछ value, नहीं तो 0 में कुछ दिखेगा ही नहीं. तो this code is very simple. Controller dot is completed, or you can write controller dot status and check its status that if it is completed. ठीक है. And then you can reverse it. अगर वो कंप्लीट हो गया, जैसे जो एनिमेशन है कंप्लीट हो गई है, नाउ विल क्लिक इट अगेन, इट विल श्रिंक इट डाउन बिकॉज इट विल रिवर्स एनिमेशन नाउ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव रिटन कि अगर एनिमेशन इज कंप्लीटेड तो रिवर्स द कंट्रोलर. एल्स इफ इट इज़ एनी अदर स्टेट, लेट्स से इट इज़ एट द इनिशिएटिंग स्टेज जो कि अभी है, तो इफ आई क्लिक इट नाउ इट विल फॉरवर्ड द एनिमेशन विच इज़ गोइंग फ्रॉम 0.5 to 1.5. दिस इज़ वन ऑफ द use cases of animation controller. You can make way complex animations using animation controller, but it is a little hard to perfect. So I guess from what I remember, I used in one of my applications, it is named AnimatedIt. यार ये Firefox की दिक्कत है, एक second. Let's open Chrome. .dev AnimatedIt. Yeah, Flutter Animated, I guess. It is a very popular package from what animated it is discontinued. Let's see, Flutter Animate करके है. Yeah, this is the one. This is a very good animation क्या कहते हैं package to make some animations very easily instead of writing the whole code yourself. You just have to do, देखो फेड इफेक्ट, अगर तुम्हें फेड करने का इफेक्ट बनाना है तुम्हें बैठ के बनाना पड़ेगा कि तुम्हें ओपेसिटी को चेंज करना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में, फिर वो तुम्हें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा. वो सब कुछ अगर तुम्हें नहीं करना है, उस झंझट में नहीं पड़ना है, तो सी दिस इज़ वेरी सिंपल. टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड डॉट एनिमेट लिखना है, उसके बाद डॉट फेड करो, डॉट स्केल करो, जो भी तुम्हें करना है, यू कैन डायरेक्टली डू इट हेयर. दिस इज़ वेरी सिंपल. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अ लाइब्रेरी, इफ़ अगर किसी ने सुनी है वेब वर्ल्ड में GSAP करके, ग्रीन सॉक करके कुछ तो लाइब्रेरी है, GSAP. इट इज़ वेरी गुड लाइब्रेरी. इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. To make good animations, instead of doing it yourself manually, you can rely on someone else packages which is animate, fade, scale, sorry क्या नाम है उसका, Flutter Animate करके. You can use this in your basically app. You can see कि डॉट फेड में डायरेक्टली यहीं ड्यूरेशन डाल दी मैंने 500.ms, स्केल डाल दिया 500.ms. तो ब्लर XY में बहुत सारी एनिमेशंस are already made. You don't have to make it from scratch. I would suggest you to make the next assignment and use this one. Also, you can make your own one. Sir, why do you use Firefox? Why do I use Firefox? Yeah, so I have been using Linux from a lot of time. So I used Arch Linux and Mint, right? तो उसमें by default Firefox होता है, तो I was using Firefox वहाँ पे. तो वहाँ पे मेरे सारे पासवर्ड एंड सीक्रेट्स यहीं पे हैं, सारी एक्सटेंशंस हैं. हालांकि आई नो यू कैन इम्पोर्ट इट इनटू क्रोम एक्सेट्रा, बट अब चल रहा है बहुत टाइम से, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फायरफॉक्स. और कुछ नहीं, कुछ ऐसा खास रीज़न नहीं है. वे अभी या सो यूज़ दिस फ्लटर एनिमेट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट. असाइनमेंट इज़ थोड़ी अच्छी. एज द सेड यू की इट विल इंक्रीज, वी विल इंक्रीज द असाइनमेंट का लेवल थोड़ा थोड़ा. तो यू हैव टू गो look into Spotify की home screen or any screen which you want to make. That's why I asked you about songs. बहुत कम लोगों ने बताया, but खैर कोई नहीं. And
यू जस्ट हैव टू मेक दिस, ये वाला नहीं ऐप ढूंढते हैं हम, ये रहा। तो यू हैव टू मेक दिस स्क्रीन, अरे यार खुल जा भाई, स्पॉटिफाई होम स्क्रीन अप images and see this is one of a good example और दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल प्रैक्टिस। एक तो कि यू एक्स प्रिमिटिव्स हमने देख लिए, तो यू विल ट्राई कि 8 पिक्सल्स है कैसा है, वो सब कुछ करके देखना। उसके बाद यू कैन सी ग्रेडियंट जो हमने एक्सप्लोर नहीं करा है, इफ़ यू डोंट वांट टू अप्लाई इट नो इशूज़, यू कैन अप्लाई इट, ठीक है। उसके बाद यू विल अप्लाई इमेजेस ऑल्सो फ्रॉम द नेटवर्क, इमेज और नेटवर्क, वो भी हमने डिस्कस करा है लास्ट क्लास में। तो जितनी क्लासेज आती जा रही हैं वी विल उससे सब एक्यूमुलेशन होती जा रही है। वन थिंग कि जैसे ये है, अब इसमें यहाँ पे भी इमेजेस हैं, यहाँ पे टेक्स्ट हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स विजिट। इफ़ एज द नेस्टिंग बढ़ती जाएगी तो यू इवेंचुअली विल हैव टू मेक इट इनटू डिफरेंट फाइल्स ऑफ विजिट्स एंड ऐड देम देयर, ठीक है। और यू कैन सी कि यहाँ ये भी लिस्ट है बट इट्स स्क्रोल्स वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। तो वन ऑफ द चैलेंज फॉर यू इज़ टू फिगर आउट कि इसको हॉरिजॉन्टली कैसे स्क्रोल करवाऊँ। बाय डिफ़ॉल्ट इट स्क्रोल्स वर्टिकली, ठीक है। If you guys know how to make a bottom navigation bar, do it. If you don't know, then don't use it. But use the today's concept of making a stack. Make a stack. उसके अंदर ये सारा सिस्टम डाल दो, उसके बाद एट द लास्ट मेक अ कंटेनर एंड उसको प्लेस कर दो बिल्कुल बॉटम पे एंड एक्सपैंड इट्स विड्थ टू इन्फिनाइट, या ऐसे डू इट, ट्राई टू मेक इट योर सेल्फ कि बॉटम नेविगेशन बार ही तुमने खुद बना ली। अगर तुम्हें आती है तो यूज़ दैट, नहीं तो यू कैन मेक इट योर सेल्फ। दिस इज़ द पेज यू वॉन्ट टू यूज़ फॉर द रेफरेंस। ऐसा कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वाला बनाना है या ये बनाना है, जो भी तुम्हें सही लगे वो बना लो। इट इज़ फॉर योर ऑन गुड, ठीक है। बाकी दिस इज़ द होम पेज, मे बी ट्राई टू मेक दिस एक्सेट्रा। बाकी देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि ये आज ही पब्लिश करना है, मतलब आज ही उसमें डालना है, क्या कहते हैं, फॉर्म्स में कल भी नहीं डाला कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डाल लो, आराम से बना लो, बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। और स्लाइड्स में डाल दूँगा। वीडियो कल थोड़ी लेट हो गई बिकॉज कहाँ गया वो फायरफॉक्स, वीडियो कल थोड़ी लेट हो गई बिकॉज वो था देयर वाज सम इश्यूज़ इन, वी हैव टू मेक इट स्क्रोलेबल। या द जो लिस्ट होगी, अगर तुम नॉर्मल लिस्ट बनाते हो वो तो वर्टिकली स्क्रोलेबल होती ही है बाय डिफ़ॉल्ट। बस तुम्हें इसको देखना है कि इसको हॉरिजॉन्टली कैसे स्क्रॉल करवाना है, ठीक है। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो मुझे बता देना, एरर्स वगैरह। बाकी व्हाट आई वांट टू से वाज कि हाँ, कल जो क्या कहते हैं उसे, वीडियो लेट हो गई बिकॉज कुछ तो सर्वर्स में इशू था यूट्यूब के, आई एम नॉट श्योर, बट वो 5-6 घंटे इट वाज स्टिल प्रोसेसिंग, बट होपफुली आज बहुत जल्दी आ जाएगी। एंड एनी क्वेश्चंस? 12 बंदे रह गए देखो सिर्फ। हाउ वाज द क्लास, पहले तो बताओ हाउ वाज इट कंपेयर टू लास्ट क्लासेस, एंड anything you want to add or W class as usual very interesting cool, because आज हमने बहुत छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छोटे से जो बहुत सारे पढ़े, दैट्स वाई it felt interesting, getting interesting every day, cool, interesting class. Any doubt you guys want to ask? API next, yeah, I'm planning कि या तो API ही डाल दें, मतलब related to web and asynchronous programming, या फिर if you guys want to understand how to validate forms and I guess वो बाद में करेंगे। तो API एंड asynchronous प्रोग्रामिंग ये सब पढ़ते हैं कल। दिस इज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा काइंड ऑफ गोइंग टू वेब एंड बैक एंड वाला स्टफ, वो पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एनिमेशन तो बनाते रहोगे तुम लोग। बाकी या और कुछ? एसिंक ऑलरेडी लोल, या क्या शेड्यूल में कोई बहुत लेट है क्या? लेट्स सी। Bootcamp overview. We did this and this in a single class. Then we did this today, animations, themes, and yeah, one thing which we missed is today how to make global themes and persist it across the app.
वो मैं किसी दिन प्लग इन कर दूंगा कि ऐसे तुम बहुत ज़्यादा बैकएंड पढ़ रहे हो, बीच में कहीं मैं प्लग इन कर दूंगा ताकि तुम्हारा ऐसे अटेंशन स्पैन ठीक रहे, ठीक है। वो हम देख लेंगे कि जो ये रह गया थीम्स रह गई हैं। बाकी आई गेस यहाँ तक सिर्फ 5 तक इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन। नेक्स्ट फ्रॉम द प्लान वॉज दिस टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट कंट्रोलर्स, बट आई फील कि वी विल डिस्कस दिस जस्ट बिफोर क्लाउड फायर स्टोर एंड HTTP एक्सेट्रा, इनके पहले लेट्स डिस्कस पहले इवेंट लूप एक्सेट्रा एंड शेयर प्रेफरेंसेस नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ लोकल स्टोरेज वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। एंड I would suggest कि we will integrate API layer class 8 tomorrow, and anything else, anyone ऐसे कोई नॉर्मल जर्नल बात करनी हो वो भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बताओ। Let's quit this